Assalamu alaikum guys, I'm Shafahal Khan, and today in this lecture I'm gonna do most of the recent physics questions which have been tested in the past papers and which are related to your syllabus, especially the latest syllabus, the MDCAT 2020 PMC NMDCAT syllabus basically. Okay, and if you have any question you may comment it down and let's get started. Okay, so NMDCAT Rapid Revision Series Physics with Shafat Khan, and there we go. This is our first question. Okay, all the questions that we have over here right now, these are all in the latest syllabus, okay? So none of them are outside the syllabus, okay? So it's advised to do the questions first, meaning do them yourself, and then compare them with my answers or my solutions. So let's get started. Okay, so the first question says that a battery has an EMF of 6 volts and an internal resistance of 0.4 ohms, which is connected to a 2.6 ohm resistor through a switch. Okay, 31 says when the switch is open, the potential difference between the terminals of the battery in volts is, okay, if the switch is open, that means, for instance, if this is our battery and this is the internal resistance with it, this is R, the small r represents internal resistance, it is connected to some circuit. ठीक है, let's assume यहाँ कोई resistor लगा हुआ है, चलो भाई ये circuit में लगा हुआ है, ठीक है. अब यहाँ होना ये है कि okay, अब इस circuit में ये हमारी battery है यहाँ पर इस region में, ठीक है. The small r represents the internal resistance and this is the EMF produced by the battery, जो कि कितना होता है 6 volts दिया हुआ है हमें question में. अब इन्होंने कहा है कि यहाँ एक स्विच लगा हुआ था और उस स्विच को हमने खोल दिया, मतलब सर्किट को ब्रेक कर दिया है. फॉर इंस्टेंस अब ये इस टाइप का नहीं है, इसको मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ एंड लेट्स अज्यूम ये सर्किट जो है यहाँ से ओपन है, ठीक है. लेट्स से ये स्विच ओपन है, ठीक है, ये कनेक्ट नहीं हुआ सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो क्या इसमें कोई करंट फ्लो करेगा? नो करंट फ्लोज, ठीक है. अगर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका क्या मतलब हुआ कि जो बैटरी का ईएमएफ है वही वोल्टेज रिकॉर्ड होगा अगर हम यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा लें, राइट. बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा लें अगर, तो कोई सिंस करंट कोई पास नहीं हो रहा तो कोई वोल्टेज इस इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू ड्रॉप नहीं होगा, तो इसलिए वोल्टेज की रीडिंग वही होगी जो कि बैटरी की रीडिंग ईएमएफ होगा, ठीक है. सो 6 वोल्ट्स आपका आंसर होगा. इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं. Whenever you have internal resistance, so to calculate this terminal potential difference, there is a formula. Terminal potential difference is equal to EMF minus I into R. इसको किरचॉफ सेकंड लॉ से ही डिराइव किया है, ठीक है, वो मैं नहीं कर रहा यहाँ पर. कि आपको अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो वो EMF माइनस आई आर होगा. R represents the internal resistance, ठीक है. अब करंट, क्योंकि ये सर्किट ओपन है तो करंट की वैल्यू 0 हो गई, तो ये पूरा फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0. तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया कि EMF और वोल्टेज आपके इक्वल आ गए, ठीक है. तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि आंसर आपका 6 वोल्ट्स ही होगा अक्रॉस द बैटरी. 6 वोल्ट्स वुड बी डिटरमिन्ड. Then the next question says, when the switch is closed, the potential difference between the terminals of the battery is. अच्छा, अब इन्होंने ये switch को close कर लिया, मतलब complete कर लिया इस circuit को. अब बताएं terminal potential difference क्या होगा. Again we can use the same formula, but उसके लिए हमें current की value चाहिए. Current की value calculate करने के लिए आप एक method apply कर सकते हैं. Internal resistance की value आपको given है 0.4 ohms, ठीक है, ये 0.4 ohms है. एंड ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2.6 ohms एंड बैटरी का ईएमएफ आपको 6 वोल्ट्स दिया हुआ है. तो आप टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट की कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सीरीज सर्किट है. टोटल रेजिस्टेंस आप इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दें तो ये 3 ohms हो जाएगा, ठीक है. नाउ यू हैव द रेजिस्टेंस एंड यू आल्सो हैव द वोल्टेज मीनिंग द ईएमएफ, so you can use them to calculate the current. I is equal to V upon R. 6/3 मतलब 2 एम्पियर हो गया. आपके पास करंट आ गया है, ठीक है. अब करंट को यूज करते हुए आप
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं इसी फार्मूला में, बस प्लग इन कर दें, ठीक है। तो 6 माइनस 2 इंटू 0.4 हो जाएगा, एंड जो भी आपका आंसर आ गया वो आपका आंसर है। तो ये 5.2 आ गया वोल्ट्स, ठीक है। तो ये 5.2 आपका डी आंसर है इसमें। क्लियर? नेक्स्ट, assume that you have two balls of identical volume, one weighing 2 newtons and other 10 newtons, ठीक है। आपके पास दो balls हैं, ठीक है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, इसका भी वॉल्यूम v है, इसका भी वॉल्यूम v है, लेकिन दोनों का वेट डिफरेंट है, ठीक है। लेट्स अज्यूम ये आपकी फर्स्ट बॉल a है, ये आपकी बॉल b है, ठीक है। बॉल a का वेट 2 न्यूटन है एंड बॉल b का वेट 10 न्यूटन है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि दोनों को हमने फ्री फॉल मोशन में छोड़ दिया, ठीक है। दे आर फॉलिंग फ्रीली आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू, ठीक है। इन दोनों को आपने एक सेम लेवल से रिलीज कर दिया एंड फ्री फॉल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं दोनों। तो अब बताएं कि कौन सा इनमें से ट्रू होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ें तो द 10 न्यूटन बॉल फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट विल बी एक्सेलरेटेड एट अ ग्रेटर रेट देन द 2 न्यूटन बॉल। Guys, remember from your theory that in free fall motion, the value of acceleration is always equal to the acceleration of free fall. So value of acceleration दोनों की constant रहेगी. That will not change. क्योंकि हम assume करते हैं कि air resistance is zero. ठीक है, air resistance is negligible. So the value of G is gonna be the same for both of them. So statement 1 is wrong. Statement 1 में ये कहा है कि 10 Newton जो है it will be accelerated at a greater rate. nahi, it won't be accelerated at a greater rate. It would have the same acceleration as a 2 Newton ball. Then let's look at statement 2. अच्छा, by the way statement 1 गलत है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ना option A हो सकता है ना option B हो सकता है, ठीक है। Now we have to look at option C or option D or E, ठीक है। Now after this part 2, the second statement says at the end of the 4 seconds of the free fall, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 एंड 4 या 4 ओनली, स्टेटमेंट 2 को देख लेते हैं। स्टेटमेंट 3 को देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 को देखें तो एट द एंड ऑफ द 4 seconds ऑफ फ्री फॉल द 10 न्यूटन बॉल विल हैव 5 times द मोमेंटम ऑफ द 2 न्यूटन बॉल, ठीक है। सो at the end of 4 seconds of free fall, okay, so if the time is 4 seconds, what will happen to the momentum? So momentum's formula is mass into velocity, okay. We know that the velocity after 5 seconds is going to be the same for both of them, okay. Velocity will be the same because acceleration is the same, okay. The value of acceleration is the same for both the balls, therefore their final velocity after 4 seconds will also be the same. So that means velocity is the same. Now what about the mass? The mass is going to be different because their weights are different. And how to calculate the mass for ball A and ball B? The mass of ball A, we can use the formula W equals mg. Mass of ball A is going to be W upon G, meaning the weight of A upon G, so 2 upon G. And the mass of ball B is going to be the weight of ball B, which is 10 upon G. Now if you look at them, their masses are different, right? The mass of this 10 Newton ball is 5 times more than the mass of the 2 Newton ball. So that means the momentum, since momentum is proportional to the mass, is gonna be 5 times more for the 10 Newton ball. And it's if it's gonna be 5 times more than that of the 2 Newton ball, then that means statement 2 is actually correct. And if statement 2 is correct, then the only option which includes statement 2 is option C, okay. Statement 4 is also correct because the 10 Newton ball possesses greater inertia. Yes, it does, because inertia also depends upon the mass. So since 10 Newton has a greater mass, therefore it also has greater inertia, okay. Let's move on to the next. A car is waiting at a traffic signal, and when the signal turns green, the car starts ahead with a constant acceleration. At the same time, a bus traveling with a constant speed of 10 meters per second overtakes and passes the car. How far beyond its starting point will the car overtake the bus? Okay, so this is our starting point, for instance, and let's assume this is our road, and on this road we have a car right over here,
and let's say the bus is coming from the left. Okay, this is our bus coming in, and the speed which bus has is 10 meters per second. Okay, and that's the constant speed it has, and it crosses and overtakes the car at first when the car is at rest. But then as soon as the car starts moving, it starts from rest, the car gains an acceleration. It actually has an acceleration of 2 meters per second squared. Okay, right guys, so now the acceleration of the car is 2 meters per second squared, and its initial velocity is 0 because it's starting out from rest, whereas the bus has a constant velocity of 10 meters per second, and its acceleration is obviously going to be 0 because the velocity is constant. So now, when is the time when this car will overtake this bus again? Because okay, now as soon as this traffic signal it got green, the car started moving. ठीक है, कार चलने लग गई, लेकिन ये बस उससे आगे निकल चुकी थी तब तक, लेकिन बस की कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन कार एक्सेलरेट कर रही है। तो एक टाइम आएगा जब कार बस से आगे दोबारा निकल जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट आएगा, हम अज्यूम करते हैं वो पॉइंट कहीं पर आ जाता है किसी डिस्टेंस के बाद, लेट्स से s वो डिस्टेंस है जिस पर वो पॉइंट आ जाता है, और यही ऐसा हमें कैलकुलेट करने को शायद कहा हुआ भी है। यस, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। लेट्स अज्यूम के t सेकंड्स के बाद ये कार इस बस को ओवरटेक कर जाती है। तो अब बताएं क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर? बस पर तो एक ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, बस पे कोई और फॉर्मूला लग नहीं सकता। कौन सा? s इज इक्वल टू vt, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं है, इट्स इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक्सेलरेशन 0। हाँ, यहाँ पर कार पर हम कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं बिकॉज इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सो नाउ I'm going to use s is equal to ut plus half at squared. Now, we know that u is 0 because it started out from rest. So half times acceleration is 2 times the t which we need to calculate, and is equal to s. Okay? So this is going to become t squared. So the distance covered is t squared according to the equation of motion for the car. And the time according to this formula is going to be s upon v. Now we know that this is s upon v. We can plug this over there, या फिर आसान कर लेते हैं, ये भी छोड़ो, ss दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, vt is equal to t squared. अच्छा, ये v की वैल्यू हमें पता है, it's 10, so 10t is equal to t squared. Now t से ये t squared कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। 10 seconds, we have the time equal 10 seconds. Now if we have the time, use any of these two equations to calculate the distance. I'm going to use this equation. So s is equals to 10 multiplied by 10. Okay, 10 multiplied by 10. Okay, vt here, the velocity is 10 and time is also 10, so it's going to become 100 meters. So that's your distance. 100 meters is your answer. That's the distance when the car will overtake the bus again. A sample of an ideal gas occupies a volume V, a pressure P, and absolute temperature T. The mass of each molecule is M. Okay, यहाँ पर एक कीवर्ड पे गौर करने की जरूरत है कि each molecule बोला हुआ है, मतलब हर molecule का mass इतना है। ठीक है, if K is the Boltzmann constant, calculate the density of the gas. ठीक है, guys, this is a tricky question, so let's focus on it. Now, you know that for an ideal gas, PV equals nRT is the ideal gas equation or the general gas equation. We can change this equation to calculate the density or to calculate the Boltzmann constant. I'm going to calculate the Boltzmann constant. Okay, so we know that the moles is equal to the number of particles divided by Avogadro's number. Okay, multiplied by R multiplied by T equals PV. R upon NA is your Boltzmann constant, right? Boltzmann constant का formula क्या है? R upon NA, right? तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से, और T as it is आ जाएगा, N as it is आ जाएगा, तो ये बन जाएगा PV equals NKT, right? Now PV equals NKT आ गया हमारे पास। अब क्या करना है? डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आपके पास M गिवन है ना, M, दोनों साइड्स को हम M से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड्स को M से डिवाइड कर दिया तो क्या फायदा हुआ? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? ये है आपके पास वॉल्यूम अपॉन मास, मतलब ये 1 अपॉन डेंसिटी के इक्वल है। ये फॉर्मूला बन जाएगा
अच्छा बाय द वे अभी अभी रुके, डिवाइड नहीं करें, एक काम कर लेते हैं ताकि वो n, ये n जो है ना इसको भी हमें हटाना है, किसी तरह से खत्म करना है, बिकॉज n is no way to be found over here. ठीक है, so what I'm gonna do is I'm gonna multiply both the sides by the mass. Wait, PV. Okay, multiply both the sides by the mass m. Now we know that m, this small mass, is the mass of one molecule. See, the mass of each molecule is m. If this mass of each molecule is multiplied by the number of molecules, we'll get the total mass, right? So nm is your total mass, and kT as it is aa gaya, right? And if this volume is also the volume of all the molecules, not of the volume of one molecule, is the volume of all the molecules. When I bring it over here, this is going to become Pm equals nm kT upon V, right? Now nm upon V is also equal to the density, because this is the total mass divided by the total volume of the gas, right? So this is going to be density into K into T being equal to pressure into M, pressure into mass of a single molecule. Now just make the density the subject. So density is equals to pressure into M upon K into T. So PM upon KT is your answer, which is right over here, option D. And I know this was a tricky question. Guys, इस question को खुद से एक बार solve कीजिएगा और ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये tricky है, ठीक है? And ये solution देखने से पहले जो है आप खुद कीजिए, ठीक है? एक बार अब मैंने कर दिया है, लेकिन आप खुद भी एक बार ट्राई करें, चाहे आपने सॉल्यूशन देख भी लिया हो तब भी, ठीक है? दिस इज एन ट्रिकी क्वेश्चन and important as well. Now next one, a ball moving horizontally with a speed v strikes a bob of the symbol pendulum at rest. Now the mass of the bob is equal to the mass of the ball. If the collision is elastic, the bob will rise to a height. Okay, collision is elastic. Elastic means there is no loss of energy, right? And if there's no loss of energy and the masses are the same, then the velocity of the bob will also be the same as the velocity of the ball, right? So if this is your ball and it hits the bob of the pendulum, this is your pendulum bob hanging over here, the velocity of the ball is v. It hits the bob will also get the same velocity because collision is elastic and the masses are also the same. Perfectly elastic collision हो गया यहाँ पर, ठीक है? अब ये बताएं कि इसकी हाइट कितनी गेन करेगा ये, मतलब in other words the examiner is just asking you the conversion of kinetic energy to potential energy of the bob, because you know that after the collision the bob will rise to a certain height, right? So I can say that the change in kinetic energy will equal the change in potential energy, right? According to law of conservation of energy, this kinetic energy will get converted into potential energy at a certain height. The formula for kinetic energy is half mv squared, and the formula for kinetic potential energy is mgh, right? The masses get cancelled. Now all we need to do is just find out, just make h the subject. So h is equals to v squared upon 2g is your answer. So v squared upon 2g is the answer. It's right over here, option B, correct? Moving on. Okay, now the quantity of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance through 1 Kelvin and its units are joule per mole Kelvin is called molar specific heat. This is a definition you need to learn. ठीक है, ये आपको याद करनी है कि the temperature जो कि required है 1 mole का, अच्छा 1 Kelvin है तो मतलब specific ही होगा. 1 Kelvin से जब भी temperature rise कराते हैं तो specific होता है वो, ठीक है? And apart from that वो 1 mole का भी है तो molar हो गया, ठीक है? तो molar specific heat. Moving on. Now, a shot leaves a gun at a rest at a rate of 160 meters per second. Calculate the distance to which it could be projected and the height to which it would rise. Okay, so since it is projected, तो मतलब एक projectile motion वो perform कर रहा होगा, ठीक है? तो ये let's assume यहाँ से उस shot को हमने फेंका, ठीक है? अब वो maximum height और maximum range हमसे पूछ रहा है in other words. इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 160 मीटर्स पर सेकंड जो कि इन्होंने बता दी है यहाँ पर. अब पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज बताओ, ठीक है? तो सिंपल है, आपने फार्मूलाज अगर याद किए होंगे, शॉर्टकट फार्मूलाज जो थे, वैसे जनरली मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता शॉर्टकट्स याद करने के लिए, बट यहाँ पर शॉर्टकट रेंज का शॉर्टकट आप याद कर लें, ठीक है? रेंज जो है ये काफी बार आ जाता है. रेंज का फार्मूला क्या है, शॉर्टकट क्या है? v0 स्क्वायर्ड sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g,
That's the shortcut for the range. Now, you know that the initial, okay, you are calculating the maximum range. For a maximum range, the value of theta must equal 45 degrees, okay? ये 45 डिग्रीज होनी चाहिए. तो ये 45 डिग्रीज को आप यहाँ थीटा की जगह प्लग इन करें तो 45 इंटू 2 90 हो जाएगा एंड साइन 90 इज 1. सो आपके पास बचेगा v नॉट स्क्वायर्ड अपॉन g. ठीक है, अब v की वैल्यू आपको पता है इट्स 160, राइट? सो 160 स्क्वायर्ड मींस 160 मल्टीप्लाइड बाय 160 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि g की वैल्यू इज 10. अब 10 0 0 cancels and you just do your math over here. So 16 times 16, 256 2560 because there's 160. 2560 यहीं पर है. It's only option B which includes 2560. So you don't even need to calculate the maximum height. Okay, you don't even need to, because this is the only option which includes this answer. That's it. Let's moving on to the next. A car covers the first half of a certain distance with a speed v1 and the second half with a speed v2. Find the average speed during the whole journey. Okay, so this is actually similar to that question. याद है एक common question आता है जिसमें एक कार जाते हुए एक डिस्टेंस एक स्पीड से जाती है और वापस आते हुए किसी दूसरे स्पीड से आती है एंड उसका एवरेज स्पीड निकालें या कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड. तो गाइज इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है. अगेन मैं सजेस्ट नहीं करता शॉर्टकट फार्मूलाज याद करने के लिए, बट ये वाला आप कर सकते हैं याद, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसी सिनेरियो पे अप्लाई होगा. ठीक है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. This is the average speed for the journey in which is in two parts and both the parts have the same length. ठीक है, एंड इसको मैं मैथमेटिकली आपको प्रूव भी कर देता हूँ. ठीक है, तो अब जाते हुए इसका डिस्टेंस s है एंड फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस s है और दूसरे पार्ट का भी डिस्टेंस s है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हाफ हाफ है ना. तो ये टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा. ठीक है, पहला हाफ जो है उसने v1 से कवर किया, दूसरा हाफ v2 से कवर किया. तो पहले हाफ का टाइम कितना लगा होगा, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट? सो s अपॉन v1. दूसरे हाफ का टाइम कितना लगा होगा, s अपॉन v2. अब आपके पास टाइम्स आ गए. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना है, 2s. टोटल टाइम कितना है, इन दोनों का सम. सो s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2, इनको सम कर दें. ये हो जाएगा v1 v2 एंड ये हो जाएगा sv2 प्लस sv1. अच्छा, s को कॉमन भी निकाल सकते हैं आप. तो s को जब कॉमन निकालेंगे तो ये यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ. ठीक है, s को कॉमन निकालेंगे तो ये v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2 हो जाएगा, राइट? ये आपके पास क्या चीज आ गई, अभी टोटल टाइम आ गया, टोटल टाइम. एंड टोटल डिस्टेंस आपको पता है 2s है. तो इस टोटल टाइम को आप यहाँ डिनोमिनेटर में प्लग इन करें तो ये हो जाएगा s इंटू v1 प्लस v2. एंड सिंस दिस v1 v2 are in the denominator of the denominator, so they'll go up and become the numerator. तो v1 into v2 हो जाएंगे. ठीक है, एंड s से s कैंसिल आउट हो जाएगा एंड क्या आंसर आ गया आपके पास, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2. आपका आंसर है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ऑप्शन बी. ठीक है, एंड दैट्स इट. ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. गाइस क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए. आई विल गेट बैक टू यू. ठीक है, थैंक यू, टेक केयर.